Let's just record this before I forget it. Um, so initially we have one example in MDP, right? So let's do some examples. We have one example of MDP in which I have a dice and I throw a dice of, it's like a six-sided dice. So I have numbers appearing from 1 to 6, and then I have some conditions, okay? And the conditions that I have is if I immediately quit the game तो मुझे $10 मिलेंगे एंड में, ठीक है? या फिर अगर मैं स्टे करता हूँ गेम में तो मैं वापसी रोल करूँगा डाइस। अगर 1 और 2 आता है तो हम इमीडिएटली एंड कर देंगे गेम। अगर हमारे पास 1 और 2 नहीं आता, अगर हमारे पास 3, 4, 5, 6 आता है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट रोल करेंगे डाइस, ठीक है? सो द क्वेश्चन है कि हम इसको एमडीपी में कैसे डिपिक्ट करेंगे, कैसे शो करेंगे, एंड हाउ टू लाइक गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें इनको प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करनी होंगी कि जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं गेम को तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो एक्शंस हैं, या तो हम इमीडिएटली क्विट कर देंगे या फिर हम स्टे करेंगे, ठीक है? अब वो जो एक्शंस जो मैंने परफॉर्म किए हैं, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मे बी दैट विल हैपन और मे बी दैट वोंट हैपन। So my actions are going to be stay or quit, right? So the actions that I have, is going to be stay or quit, ठीक है? Now these actions might or might not happen, जिसकी वजह से हमें इनके लिए probabilities calculate करनी होंगी। तो अगर मैं immediately quit की probability देखूँ, so that is just 1, right? Because मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने इमीडिएटली क्विट कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैं स्टे करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं स्टे करूँगा तो जो मेरा नेक्स्ट रोल जो होगा डाइस का, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि आई हैव 2/6 ऑप्शंस। 1 और 2 आएगा तो मैं क्या करूँगा, एंड कर दूँगा। अगर 2 और 1 नहीं आता है, अगर 3, 4, 5, 6 आता है तो मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊँगा विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3, विच इज़ बेसिकली 4/6 आई गेस, या इट्स 4/6, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई ये करना है कि मेरी स्टेट्स क्या हैं, मेरी ट्रांजिशंस क्या हैं और मेरे एक्शंस क्या हैं, ठीक है? सो मेरे पास, लेट मी डू दिस विद अनदर कलर बिकॉज आई हैव रिटन एवरीथिंग डाउन एंड आई विल जस्ट हाईलाइट इट। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास दो एक्शंस हैं, स्टे और क्विट, और मेरे पास दो स्टेट्स हैं, इन और एंड, ठीक है? नाउ ट्रांजिशंस होंगी मेरे पास जो ये 1/3 और 2/3 प्रिडिक्ट करेंगी। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि मैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स की स्टेट्स और एक्शंस लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हाँ, इनको मैं लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी स्टेट मशीन बना लेता हूँ, ठीक है? नाउ जस्ट आई वांट टू गिव वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो आपके एक्शंस होते हैं ना, वो आपकी पॉलिसीज़ भी होती हैं। सो इट इज़ माई पॉलिसी इफ़ आई वांट टू स्टे और इफ़ आई वांट टू क्विट, इट्स अ recommendation. And remember that these recommendations are not guaranteed and there is some probability related to it. So maybe I might choose that action, I might not choose that action. It all depends on that probability. Okay, so now you have different states, right? I had two states and states were in and end. So मैंने एक स्टेट रख दिया in और एक स्टेट रख दिया end, ठीक है? मेरे जो एक्शंस होंगे, ठीक है, वो मेरे पास एरोस पे रिप्रेजेंट हुए होते हैं। तो मेरे पास एक एक्शन आ गया स्टे का और मेरे पास एक एक्शन आ गया क्विट का, क्योंकि जब मैं गेम स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास दो एक्शंस होंगे, या तो मैं स्टे करूँगा या फिर मैं एंड करूँगा। अब जब मैं स्टे पर आया तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक चांस नोड बना देता हूँ, ठीक है? अपना चांस नोड बनाता हूँ और ये चांस नोड ये बोलता है कि या तो मैं ये एक्शन अगर परफॉर्म करता हूँ तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ रिलेटेड हैं कि या तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है? तो मेरे पास 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि मैं $4 रिवॉर्ड है, तो मेरे पास 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि मैं एंड पे जाऊँगा और मेरे पास 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि मैं वापसी इन पर आऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे इन क्विट की जो मेरे पास चांस नोड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सो यू वुड सी कि मेरे पास ज़्यादातर क्या होता है कि मैं अपने एक्शंस लिखता हूँ, मेरे पास एक चांस नोड आता है और फिर मेरे पास उससे प्रोबेबिलिटीज़ एसोसिएटेड हुई हुई होती हैं, ठीक है? अगर इसको मैं एक और अच्छे डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास ये है कि मेरे पास स्टेट एस है और इनिशियली मैं स्टेट एस पे था, एंड देन फ्रॉम स्टेट एस
where did I go? I went to an action stay or action quit, because I can perform two actions, right? So if I'm at in, I can perform two actions. I can either stay or I can quit, and then that would lead me to a chance node. ठीक है, अब chance node में अगर मैं stay करता हूँ, ठीक है, मैंने ये वाला action perform किया, so there's 2/3 probability that I would go back to in, and there's 1/3 probability that I would go to end. तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, 2/3 प्रोबेबिलिटी के मैं इन पे रिप्रेजेंट दूंगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी के मैं एंड पे आऊँगा. और क्विट, अगर मैं डायरेक्टली क्विट करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पे एसोसिएट कर दिया. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन create this thing. Now if I want to solve this thing, if I want to solve this, so assume कि मेरे पास एक फिक्स पॉलिसी मुझे मिली हुई है, and that is that I want to stay. ठीक है, so what is going to be my value over here? ठीक है, so if we are assuming that we are starting with Vn, right, क्योंकि हम यहाँ से start कर रहे हैं, ठीक है, and my policy is to stay. So if I would stay, that is my action is to stay, then I have two probabilities and I have to add those probabilities, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होता है, sum होता है, sum t जो होता है आपके पास, sum s bar t, s comma a comma s bar, ठीक है, and then you have some reward and then you have the next state. ठीक है, मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, but you can see that this S bar is basically representing कि भाई मैं कौन सी नई स्टेट पे पहुंच रहा हूँ. ठीक है, और ये जो सम t है वो ये बता रहा है कि मुझे इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है. तो हम ये चीज़ कर लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे Vn क्या होगा आपके पास, एंड रिमेंबर कि ये पूरी जो चीज़ मैंने अभी इरेज की है, दैट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ रिवॉर्ड एंड द नेक्स्ट स्टेट. सो यहाँ पर मेरे पास ट्रांजिशंस क्या है, मेरे पास ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 2/3 की. ठीक है, एंड यहाँ पर मैं मुझे रिवॉर्ड कितना मिलता है 2/3 से, 2/3 से रिवॉर्ड मिलता है मुझे $4. तो मैंने यहाँ पे अपना इमीडिएट रिवॉर्ड $4 रख दिया, प्लस आई एम गोइंग टू गेट टू अ न्यू स्टेट विच इज़ Vn. ठीक है, ये नई स्टेट है Vn, तो मैंने इसलिए इसको एक बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लस यहाँ पर फिर मेरे पास क्या है, 1/3 की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मैं एंड करूँगा और उस पर मेरे पास कितना रिवॉर्ड है, $4. तो मैंने यहाँ पे $4 रख दिया और ये मेरे पास आ जाएगा V आउट. ठीक है, ना अभी हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ये V एंड होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एंडिंग रिवॉर्ड जो है, जो टर्मिनल स्टेट का रिवॉर्ड होता है वो ज़ीरो है. सो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, and then what you will get is 4/3 over here, and you will get अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये 3 हट जाएगा, ये 3 हट जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा. एंड देन once you simplify this you will get 8 plus 3Vn bar plus 4, and this will then sum up to be 12. so मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ. ठीक है, एंड ये 3 नहीं होगा, सॉरी ये 2 होगा, और ये 2 उधर जाके माइनस होगा क्योंकि ये Vn और ये Vn सेम है. ठीक है, और ये इसलिए सेम है क्योंकि वी अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड, और नेक्स्ट राउंड जो है वो इसी स्टेट के अंदर है, तो इसलिए वी आर अज्यूमिंग कि इसका जो लिविंग रिवॉर्ड है वो उसकी स्टेट इटसेल्फ है. ठीक है, नाउ दिस माइट बी अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि जब हम ग्रिड वर्ल्ड करेंगे तो उसके अंदर ये यू विल सी दैट ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है. तो फॉर सिंपलिसिटी यू कैन जस्ट रिमेंबर कि तुम्हारे पास अगर ये डाइस वाली एग्जांपल है तो उसके अंदर यू आर नॉट गोइंग टू कैंसिल दिस टर्म आउट, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज़ ज़ीरो, यू विल इंस्टेड से कि ये वाली स्टेट वहाँ पर लेके जाओ और उसको माइनस कर दो. तो 3Vn minus 2Vn plus 12 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास Vn का जो आंसर होगा दैट विल बी 12. ठीक है, तो इफ़ यू हैव द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग then the maximum reward that you can get is 12. ठीक है, so this is like expected. Now again this is not guaranteed. ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें क्या कहते हैं ये रिवॉर्ड मिले, ये रिवॉर्ड ना भी मिले, क्योंकि there is a 2/3 probability chance that there is a 2/3 probability chance that you will come back on Vn, and there is a 1/3 probability chance that you will end. So again there is probability associated to it, क्योंकि अगर
तुमने लेट्स अज्यूम यहाँ पर you went to in state, right? There's 1/3 probability that you will just get $4, and if there is if you get $4 here, and then yeah, if you did $4 here and then you get over here, it's an $8, right? It's an $8 probability, and the maximum that you can get is 2/3 one action. You get to this state and then you get back, and yeah, I'll have to think about this, but this is how you're actually solving it. Take it. खैर, देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास ये थी एग्जांपल, ये वाली मिनट्स वाली थी, जिसके अंदर यू वर सेइंग के देयर इज़ 0.5 प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी ओवर हियर, देयर इज़ अ डिले ऑफ 2 मिनट्स. ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. यू एज्यूम दैट दिस इज़ सम ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, एंड व्हाट यू डूइंग इज़ के अगर आपके पास probability 0.5 की है तो you will stay back over here, and there's a probability that 0.5 you will go to this block, and 1 minute का तुम्हारे पास delay है हर उस पे, and there's a, if you're walking, so this is by tram, there's like a probability, and there's like a probability of 1 that is guaranteed that if you are walking so it will take you 1 minute. ठीक है, so this was another example. Then let's look at the cool fast warm वाली example. एंड कूल वार्म वाली के अंदर यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास स्टेट्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं. सो स्टेट्स हमारे पास क्या होंगे, कूल एंड वार्म. एक्शंस क्या है हमारे पास, स्लो एंड फास्ट. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है कि तुम्हारे पास एक स्लो है और तुम्हारे पास एक फास्ट है, और स्टेट्स जो हैं वो सी एंड डब्ल्यू है. अब अगर तुम्हारे पास सी है, इनिशियल कोल्ड है, तो तुम्हारे पास एक्शंस क्या होते हैं, फास्ट या स्लो. सो फास्ट आ गया, स्लो आ गया, देन वी कम टू द चांस नोड. वी डोंट नो कि हम कहाँ जाएंगे. इस डायग्राम के अंदर चांस नोड रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, बट जस्ट नोट दैट यहाँ पे एक चांस नोड होता है वैसे. ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि 0.5 प्रोबेबिलिटी पे तुम यहीं पे लैंड करोगे या नहीं लैंड करोगे. सो 0.5 चांस है कि यू विल लैंड बैक ऑन सी, एंड देयर इज़ अ 0.5 चांस दैट यू विल लैंड ऑन डब्ल्यू. सो आई कैन समहाउ राइट दिस इन फॉर्म ऑफ दिस कि मैं यहाँ पर सी लिखूँ और मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर एस आया, तो मेरे पास चांस है कि या तो मैं वापसी सी पे आऊँगा या फिर मैं यहाँ पर वार्म पे आ जाऊँगा. यू कुड राइट इट लाइक दिस, एंड देन यू कैन एसोसिएट योर प्रोबेबिलिटीज़ इन दिस फॉर्म कि यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.5 है. बट अगेन दैट इज़, it depends on how you're trying to create your state machines. If you're trying to create your state machines with the chance node, then this is how you would do it. If you're not trying to do it without, if you're not trying to do it with the chance nodes, then you would just simply say that this is S and this is warm and this is F, and you need to make sure, you have to mentally be aware that this is not guaranteed कि वो हमेशा यहाँ पर जाएगा, and you can represent this in the graph format as well. ठीक है, so that is how you would do this. इसके अंदर भी अब मैं ग्रिड वर्ल्ड पे आ जाता हूँ, क्योंकि ग्रिड वर्ल्ड से एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगी, और उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस ये वाले वार्म फास्ट वाले और ये वाले क्लियर हो जाते हैं. नाउ द थिंग वाज कि ग्रिड वर्ल्ड के अंदर हमारे पास, सबसे पहले मैं ग्रिड वर्ल्ड एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रिड वर्ल्ड की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं भी गिवन नहीं है. तो ग्रिड वर्ल्ड की जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आपका जो एजेंट जो है ना, जो आपका एजेंट है किसी भी पॉइंट पर, वो 4 डायरेक्शंस में मूव करता है. यस, अगेन हियर दिस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. योर एजेंट कैन मूव इन 4 डायरेक्शंस. It cannot move in only 3 directions, it can move in all 4 directions. So if I have an agent over here, it can go up, it can go right, it can go left, it can go down, it can go in all of those 4 directions. But my policy is, ठीक है, but my policy is that if my policy is in the up direction, ठीक है, if my policy is in the up direction, then I have a 0.8% chance that I will go in that direction. I have a 0.1% chance that I'll go in the left direction, and I have a 0.1 direction that I'll go in the right direction, which means that if I have an arrow pointing in this way, even though this is one of the 4 arrows in the actions, okay? So if I want to represent this in
in okay, let's do it over here. So if I want to represent this in a graph format, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी ये position है, let's say that this is position D for example. So if I'm at position D, I have 4 actions. I can go up, I can go down, I can go right, I can go left. And out of those 4 actions, if I choose the direction of up, which means कि मेरे पास यहाँ पे up direction वाली चीज़ मैंने follow की है. Usually मैं इसको ऐसे लिखता नहीं हूँ. हमेशा I don't know why I write this like this. It's up, down, left and right, and these are chance nodes. And let's assume that we are taking the up direction. So यहाँ पे अगर मैं up direction में जाता हूँ तो मेरे पास 0.8 chance है कि मैं वहाँ जाऊँगा. So there's 0.8 direction that I'll actually go up. So I can write that there's 0.8 chance that I'll actually go in the up direction, जो भी stated. So if I want to associate associate names to the states, I can say that this is E for example, this is F for example. So there's a 0.8 chance that I'll actually end up at state E. If I go down, then टेक्निकली अभी हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी सिर्फ इस अप के लिए हम सारे चांस नोड्स के बना रहे हैं, ठीक है. सो एक के मैं ई स्टेट पे एंड करूँगा विद 0.8% चांस. देयर इज़ अ 0.1 चांस दैट आई एंड अप एट एफ, सो आई राइट 0.1 विद एफ. And there is another 0.1 chance that I'll end up in the same state because यहाँ पे wall है. So I'll have a 0.1 chance that I'll end up at again at D. And that is it. Okay, this is the entire premise as to how we will be working. So assuming that we are doing value attrition, because value attrition के अंदर हम maximum value निकाल रहे होते हैं किसी भी state की. तो अगर हमारे पास k की value 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैं सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है. तो मेरे पास ये जो चीज़ है मैं सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ. तो टेक्निकली जो मेरे पास ग्रिड वर्ल्ड की एग्जांपल होगी उसके अंदर तुम देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर 1 लिखा होता है, यहाँ पर -1 लिखा होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि तुम यहाँ पर अगर इस स्टेट पे हो गए, यू कैन ओनली परफॉर्म 1 एक्शन विच इज़ जस्ट टू गो राइट, ठीक है. When you go right, you will get a reward of 1, which is maximizing, and you're always writing the maximizing reward. You're always writing the value as the maximizing expected utility, right? So it gets interesting when you have the k value as 2, ठीक है. तो इसके अंदर जब k की वैल्यू 2 जाती है तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि यहाँ पर फिर आपके पास इस पॉइंट पे एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है. और वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? वो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ यहाँ पे कौन सी थी, अप डाउन लेफ़्ट राइट, ठीक है. अगर मैं अप करूँगा तो एक एक्शन क्या होगा मेरे पास एक एक्शन ये होगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और दूसरा एक्शन होगा मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है. विच आई थिंक इट्स नॉट गुड बिकॉज जब आप यहाँ से एग्ज़िट करोगे ना तभी आपको 1 का रिवॉर्ड मिलेगा. सो इवन दो जब तुम ये कैलकुलेट करोगे अप वाली प्रोबेबिलिटी इट विल बी वेरी लो, ठीक है. तो होता ये है कि आपके पास आपको हर एक क्यू स्टेट की, क्योंकि वी मैक्स जो होता है वो, बल्कि मैं करके दिखाई देता हूँ, स्क्रू दिस, मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होता है ये, ठीक है. अच्छा, तो आपके पास क्यू स्टेट जो होता है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज एक्शंस, राइट, बिकॉज दीज आर ऑल द पॉलिसीज दैट यू कैन फॉलो. सो देयर इज़ वन प्रोबेबिलिटी दैट आई कुड गो अप, there's one probability that I could go right. Sorry, these are all these are all policies. They're not probabilities, they're all policies. So there's one action that I can go up, there's one action I can go right, there's one action I can go down, and there's one action that I can go left. Now by my experience I'm telling you that left and down is not that good, and up and right कर लेता हूँ मैं क्योंकि it's going to save me some time. But just know that you have to calculate all 4 of them and then you have to maximize कि उनमें चारों में से सबसे maximum किसका आ रहा है. So you have 4 actions that you can perform. So first let's assume that we are taking the action of going upwards, ठीक है. So if I'm taking this policy of going up, so I've taken this path, and let's just remove these things over here. So I'm just removing this part over here ताकि confused now. So if I'm going up, in this case I have I have a 0.8% chance. I have a 0.8% chance that I will actually go in that direction, which is that there's a 0.8% chance that I'll just end up at A again because यहाँ पर मैं wall है तो मैं वापसी यहीं पे end करूँगा. There is
going to be a 0.1% chance that I'm going to go to the state B, which is going to be यहाँ पे मैं VB लिख देता हूँ, ठीक है. So I can write this over here as well, that this will be actually be B. And there is again a 0.1% chance that I'll go in the left direction, and that is VC. Okay, so I can say that there is a 0.1 chance that I end up at C. Now again, I will write this over, I will make another grid word. So this is at representing the states at k equals to 1. So k equals to 1 में यहाँ पे 1 था, ये -1 था. We say that this is your B state, this is your A state, and this is your C state, and these are all 0 values. So what we do is that we say that there's 0.8 chance that I will go in that direction, and the reward that I get, the living reward in this case, is going to be just 0, and I am going to end up back at VA. Now we know that if I'm back at VA, the reward that I get from VA in previous k equals to 1 iteration was 0. And the whole ideology of this is that देखो मैंने यहाँ पे एक एक्शन यूटिलाइज कर लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक एक्शन रह गया है. जो मेरे पास एक एक्शन की जो ग्रिड वर्ल्ड थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है पहले से. सो आई कैन जस्ट टेक द डेटा फ्रॉम हेयर एंड आई कैन से कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन रिमेन होता है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी अच्छी इसको रखता हूँ 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर राइट भी करूँगा तो मुझे 1 रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक मैं एग्जिट नहीं करता. तो यहाँ पे VA की वैल्यू जो होगी दैट विल बी जस्ट बी 0, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली गेनिंग एनीथिंग. और यहाँ पे गामा भी आता है क्योंकि 0.9 तुम्हारे पास एक आएगा नॉइज़, वो है डिस्काउंट लगेगा. बट खैर इस एग्जाम्पल में यू विल सी दैट दिस डज नथिंग, एंड 0.1 फ्रॉम VB इज़ गोइंग टू बी 1, क्योंकि you get an immediate reward of 0, and then you end up at VB, and there's a gamma discount added to it, so the gamma is going to be 0.9, and the reward that I get at VB at k equals to 1 is 1, so I get 1 over here, and then I have 0.1 again over here, so I get 0 plus 0.9, and VC pe we can see that the reward is 0, so this will be 0. So this cancel out and this cancel out, and you're just left with this thing, which is 0.1 times 0.9 times you have 1. So this will turn out to be 0.09. So if I'm taking upwards, the value that I can obtain is 0.09. So this is 0.09. And all I've done is just did this thing, which is V upwards equals to summation of all the transition probabilities that I could have taken. So the transitions that I could have taken, if I go up, are 3. I can either go up or straight towards the right or straight towards the left. And this is represented in this tree, and we're just taking the sum of all those these three things. But to calculate the maximum value, I have to take the maximum of all of these actions, right? So we've just calculated the one for up. Now let's try to calculate the one for right, and you can also calculate one for down and one for left as well, but उनके results इसके आसपास ही आएंगे, like 0.09 के, and that's the reason why I'm not computing them. But if you want to do that, you would have to do it. So let's do it for the case of going V towards right, and this time I'll be a little bit more slower because I feel like I went really fast and I was like just going with the flow, but I will try to explain this in more simpler terms now. Okay, so if my policy is towards the right, I have 3 transitions that I could take. I could either go in that direction, in the desired direction, with a probability of 0.8. I can go upwards with a probability of 0.1, or I can go in the probability of 0.1 going downwards. Now again, I have 4 actions that I could have taken: up, right, left, down. Out of those 4 actions, I have to take the value which is maximizing, right? The maximizing value of all of those 4 actions, I have to take that value. I computed the value of the up direction, the up policy, which was 0.09, and now I'm computing the value of going towards the right. Now if I'm going towards the right, there's a probability that I might go in that direction with 0.8. I might stray away from it going upwards with 0.1. There's a 0.1 chance that I might stray downwards of 0.1. So now I'm going to write this over here, and I say that the sum of my new state, getting to the new state with transitions S, A, S bar, with getting an immediate reward R, plus gamma going to my new state, is written like this. So I need to take the sum of all of those values
which is these transitions, these probability transitions, and multiply them with their immediate reward plus the gamma times new reward का sum. ठीक है? So if I go in the right direction, I have a 0.8% chance that I'll go in the right direction. If I go there, my living reward is 0 plus the gamma, which is the discount that I've added, is 0.9. The new state that I end up at is going to be B. Now when I take this action, right, I have only one action remaining, which is either I can go up, right, down, left from here. And we know that if I was at k equals to 1 grid world, the best action was to take towards right, and that would give me the value of 1. Right now we are not concerned कि ये कौन सा action लेता है k equals to 1 पे. we're just want to make sure कि इससे हमारे पास मैक्सिमाइजिंग वैल्यू क्या आ रही थी. ठीक है, सो जो भी डायरेक्शन ले, वी डोंट केयर, वी जस्ट केयर अबाउट कि यहाँ से मैक्सिमाइजिंग वैल्यू क्या आ रही है. तो यहाँ से मैक्सिमाइजिंग वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, 1 आ रही थी. तो हम इसको वी बी लिख लेते हैं फ़िलहाल अभी, बट दिस विल देन टर्न आउट टू बी 1. ठीक है, now I have 0.1 chance that I will stay downwards. If I go downwards, my immediate reward is 0, because when I go there I get nothing, and the reward that I get in k equals to 1 is also 0. जो भी ये state है, let's assume this is state E, इसका reward 0 है, so we don't care about that. Plus 0.1. And if I'm going towards the up direction, so if I'm going back to A, so V of A, so my immediate reward is 0, the discount is 0.9. यहाँ पे भी 0.9 लग रहा था, but since it was multiplied by 0, वो मैंने इसलिए उसको डायरेक्ट 0 लिख दिया था. So यहाँ पे 0.1 लिखा है, 0 plus 0.9, I go back to my state VA, and I know that अगर मेरे पास एक action remaining रहता है तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा. So this will be 0, this will be 0, and I'm just left with 0.8 times 0.9 times 1, and that is 0.72. So we say that हमारे पास 4 वैल्यूज़ आए, फॉर एग्जांपल 0.9 आई. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट पर हमारे पास लेट्स अज्यूम 0.08 आई, वी डाउन पे हमारे पास लेट्स अज्यूम -1 आई, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़. तो इन सारी वैल्यूज़ में से सारी जो हमने पॉलिसीज़ कैलकुलेट करी, ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट दिस नीटली. मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आई मेरे पास 0.72, वी डाउन की मेरे पास आई -1, और वी लेफ़्ट की आई मेरे पास 0.08. तो इन चारों वैल्यूज़ में से सबसे मैक्सिमाइजिंग वैल्यू कौन सी है, ये वाली. तो इसलिए फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.72. तो हम क्या लगाते हैं आखिरी में, वी मैक्स इक्वल्स टू वी स्टार जो होता है वो होता है आपके पास मैक्स ऑफ ऑल द क्यू वैल्यूज़ फ्रॉम एस टू ए, और ये सारी क्यू वैल्यूज़ हैं आपके पास. So that was all with related to this whole part of how to actually solve these types of questions. ठीक है, okay, what is my comment on that question v in, क्योंकि उसके अंदर हमने उसको ज़ीरो नहीं कंसिडर किया, राइट, बिकॉज यहाँ पर हम इसको ज़ीरो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे तो हमने ज़ीरो कर दिया था. तो सीन ये है कि उसके अंदर we're not actually trying to calculate V max. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तुम देखो V max कैलकुलेट नहीं हो रहा था, तो यू आर नॉट गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि होता ये कि इन केसेस के अंदर यू आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, राइट. तुमने पहले k equals to 1 कैलकुलेट किया, फिर k equals to 2 कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. पर इस केस में ये चीज़ नहीं हो रही थी. ठीक है, इस चीज़ में ये हो रहा था कि यू वर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ एज यू गो. ठीक है, यू वर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ एज यू वर गोइंग. तो इसके अंदर सबसे पहले आपने ये देखा कि अगर मैं इस स्टेट पे हूँ इन पर, और मैं एक्शन ए स्टे परफॉर्म करता हूँ, विच इज़ ये मुझे पॉलिसी मिली हुई है, तो मैंने यही चीज़ परफॉर्म की, ए स्टे किया मैंने, तो मेरे पास 2/3 चांस है कि मैं इन पे आऊँगा, और 1/3 चांस है कि मैं एंड पे आऊँगा. ठीक है, अगर मैं इन पे आता हूँ तो मेरे पास वी एन आ जाता है, अगर मैं वी एंड पे आता हूँ तो उसका रिवॉर्ड 0 है. नाउ इन से फिर वापसी जो है, मैं जो भी एक्शन परफॉर्म करूँ, ठीक है, दैट इज़ कि मेरे पास यही चीज़ जो है वो यही चीज़ यहाँ पे भी है, राइट. तो मैं उसके अंदर क्या कहते हैं,
वापसी जो है मैं स्टे का परफॉर्म कर रहा हूँ एक्शन, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर मैंने स्टे किया सो आई गेट $4, मैं वापसी स्टे करता हूँ, आई गेट $4 अगेन एंड देन आई हैव टू एंड, सो आई गेट 4 + 4 8 + 4 which is 3. I feel like that. You did stay, stay, stay. You did stay, stay, end. You did that thing. So you did 2 stays and 1 end. तो 1 end यहाँ से आया था and you said भाई एक स्टे तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं वापसी स्टे ही करूँगा तो मेरे पास आंसर ही स्टे आएगा. सो वहाँ से मैंने उसको यहाँ पे माइनस किया and that was reflected over there. Yes, I feel like that was what it was done. Okay.